Dear students, dear medicos across the country, we are very happy to share Dr. Akash with us. Rank 4. Wow, single digit rank in top 5. Beta, how you are feeling now? सर पहले तो मतलब बिलीव नहीं हुआ. आई कॉल्ड माय फ्रेंड एंड आस्क्ड हिम कि आई एम सेंडिंग यू माय स्क्रीनशॉट ऑफ एडमिट कार्ड, प्लीज देख के बता दो यही है कि नहीं. ऐसा हुआ था फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स में. ऐसा है, आई वाज इन लाइब्रेरी तब रिजल्ट आया. अरे वाह बेटा, ऐसा है. great, great. Then this will be the lifetime achievement with a rank 4. So even 10 years down the line or 20 years, this rank will give you the nice confidence, beta. So we people, we DAMS family congrats you for this awesome rank. We congrats थैंक यू you, सर. your parents for this success, and we will be using this platform to share across the country. Beta, what was your strategy? Like you are our foundation student, you joined us in the final year at DAMS Vadodara. So now, first of all, I congrats to DAMS Gujarat team, beta. Hard-working team. Always, every year we are getting awesome results from Gujarat. So we congrats you, beta. You are awesome, beta. So let us share your success journey, beta. How you start? Like in the final year, you joined classes, face-to-face classes. How was the experience of those face-to-face classes? So I think like you said in your own class that there is no substitute for face to face class, and I'm a firm believer of that, because no matter how many platforms, other videos, YouTube, XYZ sources you use, at the end of the day you have to be very focused. You have to be you have to learn the right way. So I think the right way to learn, even if people say that they're not able to sit for 12 hours, I think the right way to learn is through face to face class, through discipline, like you said in your class, that you have to maintain a discipline. There is no pause button in an offline class. So that is the major benefit I think DAMS provided me. So whatever, like you in the final year, there was a big pressure, and most of the students they choose, okay, yeah, we should concentrate only on the prof examination. They postpone the things for the next internship. So it was very difficult, I feel, for you to decide in final year to join classes face to face and writing all the notes. And now after getting this rank 4, what do you feel? The effort you were taking in the classroom of DAMS, writing your notes, that was a game Yes, changer. sir. Yes, sir. So I think that I every weekend I used to judiciously attend all the classes of DAMS. Even I had made your notes through online class till I came for the offline class. Same for Sachin sir's class. I came attended his psychiatry class offline. So all the notes, even I had made it online, I made it a point to attend. So my main aim was never the prof exam, because prof exam only teach you to read limited stuff, and that is not enough for you to become a good doctor. So you need to read in the correct way. So I think that was my main aim since final year. So, but in final year, like in DAMS Rodra, you were writing all the notes, so you were writing your own notes, or you were Yes, using, sir. yeah, you were writing your notes. And Yes, how, own like you notes. were writing your notes, did they play the role better? Like in the examination hall, I feel this NEET was a typical exam, like a different paper. So, in the examination hall, did it help you? Okay, yeah, I was writing this point on the top of the page, and there's the same concept is being asked there. Yes, sir. Many questions, like I can remember gynec at the top of my head. Even surgery for that matter. So gynec के कई question जैसे transfer slide के ऊपर जो question था, the question on abnormal uterine bleeding, all those questions, sorry, not abnormal uterine bleeding, the disorders of sexual development, all those questions, I could like remember Dipti ma'am mentioning those things in class. के if there is this, then this is the answer. So those points that I listen to live is what I think I was able to reproduce in the exam much better than what, for example, I read it in a textbook. So that was a bit different. So, when like in final year, you were writing all the notes, you were attending the lecture, and side by side, you were just appearing for your prof examination. What was the role of these class notes written in the classroom in prof examination? Sir, I'll be very honest. Sir, मैंने एक भी textbook नहीं खरीदी final year की, मैं सच बता देता हूँ. And I've declared this to my juniors as well who asked One कि second, मैंने एक I am confident every student listening to you will clap कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल सही बात कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है. That's सर मैंने great. अपने Thank जूनियर्स you, को भी यही thank you. बोला कि once you have डैम्स नोट्स, हमको एमबीबीएस में सिखाई देते कि लंबा लंबा कैसे लिखना है. डैम्स के कंसाइज नोट्स है, और दो तीन पॉइंट्स जो है उनको बड़ा चढ़ा के लिखना है. दैट एवरी एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट यू आर ट्रेन टू नो. लाइक तुमको आईवी कैंडुला डालना आता है कि नहीं, तुमको ये तो आता है कि एक छोटी चीज को 10 पेजेस में कैसे लिखना है. तो
आई थिंक दैट इवन प्रॉफ के लिए मैंने कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, बिकॉज टेक्स्ट बुक का ऐसा है कि यू हैव टू रीड इट 2 times, यू हैव टू मेक नोट्स अगेन. तो आई जस्ट फोकस ऑन माई डैम्स नोट. मेरे सर्जरी सारे A to Z सब्जेक्ट मैंने एक भी टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा. आई मेनली फोकस्ड ऑन रीडिंग द डैम्स नोट्स, इवन सॉल्विंग सम टेस्ट जो क्लास टेस्ट थे डैम्स के. आई सॉल्व देम लास्ट ईयर. लाइक आई डिड न्यूरोलॉजी फ्रॉम प्रियाचिन सर्स नोट एंड देन आई सॉल्व द क्लास टेस्ट. सेम विद रूमेटोलॉजी. तो उससे भी एक मतलब बूस्ट मिलता है तुमको कि लाइक यू आर रीडिंग नोट्स, यू आर सॉल्विंग टेस्ट, एंड प्रॉफ में भी वो हेल्प करता है. ऐसा नहीं कि लाइक सॉल्विंग टेस्ट एंड ओनली हेल्प यू इन एम लाइक नीट एग्जाम, ऐसा नहीं है. The MCQs, the test you give also help you in prof exam. So you should not narrow down ke this will only help me this and this will only help me this. So, but like in final year, when everybody was under a big pressure of medicine, surgery, gynae ops, and you were attending all these concise notes, कहीं आपको डर लगा था यार मैं कम पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग लेस एंड इट में ऐसा कुछ मन में फीलिंग आई थी बेटा? हाँ सर, मुझे याद है सैटरडे संडे ट्यूसडे को मेरा यूरोलॉजी और सर्जरी में टेस्ट था. एंड यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स की क्लास थी. तो मैंने वो आई चोज टू स्टिल अटेंड द क्लास बिकॉज मुझे ऐसा नहीं था कभी भी कि लाइक आई हैव टू फोकस ओनली ऑन फाइनल ईयर, बिकॉज फाइनल ईयर के 100 क्वेश्चंस होंगे और फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे. तो आई वुड रादर लर्न and complete my notes, because Sumer sir had told that your aim as a final year student is that you are completing your notes. So that should be your aim in final year कि तुम 19 के 19 complete करो. Don't run after making notes in internship because that is impossible. So you have to complete your all of your notes before you enter final year. Before you enter internship, and once you enter internship, then you can solve the MCQs and everything. So I feel the game changer was your discipline and on-time completion of your notes, beta. This on-time Yes, sir. completion of the notes is very crucial for medicos. Yes, sir, that is the most important part, because I see my friends who are first time learning a subject. I've already learned it, like I already made the notes, so I know what to study in that. Like छोटी सी एनेस्थीसिया मुझे पता है इतना ही पढ़ना है मुझे, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आने वाला, नहीं आया नीट में भी नहीं आया उससे बाहर क्वेश्चन, तो बस उतना ही पढ़ना है. So I'm very sure I'll just read this part. Dear medicos across the country, we are proud to have Dr. Akash, and the way he's giving the feedback, I'm awesome. You're giving nice, honest review of the preparation, how we should prepare, how we should not run behind quantity. We should just Yes, sir. focus on the concise notes. But now coming from like in the from the final year in the internship, what was your strategy? Like you have your own notes, everything with you. So in the internship, how you handle these notes? Sir, I think TND played a huge part, because what happened is that TND gives you a schedule to follow, right? You are not lost. Okay, what should I study now? One way is that you give a GT and then you see that तुम्हारे weak subjects कौन से, then you do that. That I followed in the second half of my preparation after TND got over. So what I did was I was following 1 week में 2 सब्जेक्ट. मैं ऑनलाइन भी TND देता था, मैं ऑफलाइन भी TND देता था, तो मेरे एक साथ 2 सब्जेक्ट हो जाते थे. और मैं यूजुअली TND में लास्ट ईयर का पेपर दे देता था. तो मैं अभी सपोज आपकी क्लास में आया तो मैंने ये साल का भी दे दिया, मैं लास्ट ईयर का भी दे दिया. तो आई हैव 2 years पेपर एंड आई हैव 2 years वीडियोस एंड 2 years नॉलेज. तो दैट TND पुश दैट इट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ के ये पढ़ना है, वो आपको मिल जाता है. तो उससे बहुत इजी रहता है कि यू डोंट हैव टू नाउ मेक अ शेड्यूल फॉलोइंग ऐसा. That's great, beta. So in the internship, you follow the TND religiously as well as online as well as offline, both the segments. Yes, sir. Both the same. That's great, beta. Because I have seen many students, they give the excuse it is very difficult, internship is very hectic. And I feel even in your college, internship would have been very difficult, but you tried your best and you appeared for offline as well as online, beta. Now you attended both the platform. What do you feel like if you compare with the offline session with the online? What do you feel? What is the So basic? No so there is comparison. no comparison. That is like comparing me and like probably a Messi तो नहीं बोलूंगा, बट कोई बहुत अच्छा प्लेयर ले लो आप. इतना डिफरेंट. मुझे याद है सर, मैंने बेटा टुडे यू हाँ आर द प्लेयर, टुडे यू आर प्लेयर रैंक 4 यार. यू मतलब आप समझ रहे हो रैंक 4 की वैल्यू का. सर मुझे याद है मैंने आपका वीडियो 3 दिन में देखा था. मतलब 6 hours का वीडियो था. ऑनलाइन इज लाइक 6 hours ही होता था, ऑफलाइन में देयर वाज सम डिफरेंट टाइमिंग, बट ऑनलाइन 6 hours. बट आई रिमेम्बर मैं आपका वीडियो 3 दिन में देख पाया, और मैंने TND क्लास की तो एक दिन में सब खत्म हो गया. सो दैट इज अ होल डिफरेंट गेम. मतलब इफ यू अटेंड ऑफलाइन यू हैव नो वे, यू कैन नॉट लीव द क्लास, यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू लिसन दैट वे.
So, beta, when you were attending our lectures in DAMS Rodra Center, I still remember everybody was fully excited. Ki, yeah, we have to sit from the beginning, and we should not leave the class till the last. So, what was you feel exhausted somewhere in the whole day? Ki, yaar, ye hum thak rahe hain. So, if you are getting that feeling of getting exhausted, what was your attitude, beta, at that point of time? Sir, main attitude was that what do I want to achieve out of this? Like, I have two options. Either like I stop listening and everything goes bouncer and I have to go home and again read. उससे अच्छा है कि जितनी मेरी attention अभी बाकी है, like there is human capability of sustained attention. ऐसा नहीं है. So I thought that if I have to do it, like I only have 1 year to crack it, and मुझे ये मेरी motivation था. मेरे juniors बहुत strong है. Like they used to come in TND with me and answer questions. तो मुझे डर लगता था कि इनके साथ तो एग्जाम नहीं देनी, तो मैं अभी पढ़ लेता हूँ. That was one of my big motivation there. So yes, junior, absolutely. And I always say the younger generation who is coming now is more aggressive. So it is better to crack as Yes, soon as possible. Yeah, very nice. agreed. Very lively interview. And I think everybody is listening to you will be enjoying Kyari Bacha Bilkul Sahi. After getting rank 4, you are giving such a humble, grounded interview. That's great. Yeah. Great, great. Thank you, sir. Thank you, Coming sir. on the value of MCQs, like MCQs you were हाँ. attending in the TND, if you compare with the level of MCQs in the last atypical NEET examination. हम्म. हाँ सर, जैसे टीएनडी और इवन सीबीटी के जैसे ईएनटी का पेपर सेट किया था सर. नीट के पहले लग रहा था कि ईएनटी इतना ज्यादा टफ तो नहीं आता, फिर नीट दिया तो मेरे नीट में ईएनटी में 3 गलतियां हो गई थी. लाइक 6 या जो भी 7 क्वेश्चंस थे. तो मतलब आई थिंक दैट टीएनडी का पेपर इज वन लेवल अप. इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर द टफेस्ट नीट दैट इज पॉसिबल. लाइक इससे भी और टफ पेपर बने या जितने भी टफ जितना भी हो सकता है उतना कोई क्वेश्चंस बनेगा, उतना टीएनडी का लेवल था. तो आई थिंक दैट प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट लेवल ऑफ एप्टीट्यूड कि यू आर एबल टू सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लाइक जैसे आप बोलते हैं एलिमिनेट करके या लाइक गेट कुछ कुछ तो लॉजिक लगाकर. सो सर वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो टीएनडी से हेल्प. That's great. And coming on the question back, like say you have written your notes, you have attended TND. What was the role of grand test, Veda? Grand test, SWT in your success journey? Sir, I think they played a very huge role because sometimes what happens is you get bored of reading the subject. So what I used to do is sometimes I used to give the subject test before I read the subject, because that way you also know that what part of the subject you're lacking. Like for example, you're talking about ENT. So if I give the subject test, so I know that most questions are from ear only. So I need to focus on that more. And I am getting some like larynx, pharynx wale questions wrong because they are more of anatomy, like visualizing. So if that is weak, you should focus on that. So I think subject-wise test also helps after you read the subject. But for me, it was more of that before I read the subject, I used to give the subject-wise test, get के क्या पढ़ना चाहिए, फिर मैं वो पढ़ता था तो अब मुझे वो दिखता था कि अच्छा ये क्वेश्चन इधर से उन्होंने पूछा है. तो दैट वे आई थिंक सब्जेक्ट-वाइज टेस्ट हेल्प यू बोथ बिफोर द सब्जेक्ट एंड इवन आफ्टर द सब्जेक्ट. So what I'm getting from your word, like we follow the same ENT formula. Your rank 4 is equal to class notes plus TND Yes. plus your SWT and GTs. And at the Yes, last in the internship, you attended DVT. What was the role of that DVT in your success journey, Miriam? Sir, I think DVT is the best for rapid revision, and I found the final year subjects extremely necessary for you to do from DVT because final year is like infinite, कितना भी हो सकता है. So I think that way DVT concises medicine in like 20-30 pages, and you need to focus only on that. Previous year questions उसी में लिख दो या फिर bookmark करके रखो जैसा करना है आपको. बट फाइनल ईयर जैसे ह्यूज टॉपिक्स है सर, ईएनटी और ये सब के लिए मेरे नोट्स काफी छोटे थे, डिड फ्रॉम दैट ओनली. बट मेनली ऑफ माय फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स आई थिंक जो काफी वास्ट होते हैं, दैट वे डीवीटी हेल्प यू बिकॉज दे आर boiling down like 2-3 notebooks, 2-3 years of notes just into one like 15-30-40 pages. जैसे आप बोलते हो कि मेजर सब्जेक्ट्स को 80 पेजेस और माइनर को 30 पेजेस. सर उस टाइप से डीवीटी आपको एक 20th नोटबुक जो मैं नहीं बना पाया था पर्सनली, वो एक आपको सामने से दे देता है. सो इट्स इजियर फॉर यू टू रिवाइज. That's very true. Okay, like if we have the concise notes of DVT, even final year surgery medicine is very difficult to concise, and you can do with the help of DVT. And in the Yes, last sir. spell, when we all faculties came with the concept of PYQ, how was the role Yes. those PYQ sessions? Sir, 2020
2021 से तो काफी डायरेक्ट रिपीट से मतलब ऐसा कि मैं क्वेश्चन मतलब आई यूज्ड टू मार्क द क्वेश्चन देन मार्क द आंसर देन रीड द क्वेश्चन। अरे सो आई थिंक पीवाईक्यू ऐसे होने चाहिए मतलब वो दतुरा वाला क्वेश्चन है, तुमको 4 ऑप्शन देख के पता चले तो 2021 का ही रिपीट है, तुम मार्क करो दतुरा 500 स्टिक बिन और फिर देखो कि कई क्वेश्चन तो चेंज नहीं हो गया कि आंसर ओलियंडर या कुछ तो नहीं हो गया है। ऐसा होना चाहिए, मतलब दिस इज व्हाट पीवाईक्यू solving means that वो sweating वाला question also from 2021 like you mark the option then see कि question वही है ना कि that I think PYQ का बाप like has that the was main importance in your exam. important. Yes, that's very true, beta. I always feel that if the question was from the last question, last NEET, and you're attempting wrong, it means you're absolutely you can't win the match, and we can't afford attempting those questions wrong, beta. Yes, So now yes, वो तो बिल्कुल नहीं। coming on the next segment, CBT. How was the experience of CBT, beta? Quality of सर MC. मेरा फाइनल सीबीटी वाज माय फाइनल, मतलब जो थर्ड सीबीटी था उसका सेंटर और मेरा नीट का सेंटर सेम था। तो काफी लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं देने गए थे क्योंकि थोड़ा दूर था सेंटर, हालोल में था। इतना भी दूर नहीं, मतलब तुम 2-2 घंटे ड्राइव करके जा सकते हो तो 30 मिनट 20 मिनट तो निकाल के जा ही सकते हो। आकाश बेटा, दैट्स नॉट अ आप ना वैलिड पॉइंट। कुछ ज्यादा ही ऑनेस्टली बोल रहे हो। दैट्स वेरी नाइस कमेंट कि आप 2 घंटे ड्राइव कर सकते हो तो आप उस सेंटर पे क्यों नहीं आ सकते हो? वो सेंटर आपका नीट का सेंटर है, तो आई फील सेंटर हो गया एज ए फैकल्टी के साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत मिला हुआ आपको बहुत बहुत। ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब यू हैव सीन द सेंटर, लाइक तुमको पता है कार पार्किंग इधर है, लाइक यू हैव मेंटली प्रिपेयर्ड क्योंकि दिस इज आई सीन दिस बिफोर, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू सीन दिस तो यू हैव अ फेमिलियरिटी। जैसे सेंटर में भी ऐसा होता है कि यू सीन द सेंटर बिफोर, यू नो कि क्या कहाँ है, तो तुमको मेंटली वो नहीं होता कभी भी। Very true, beta. Very true. This I feel कि if you're getting the same center, you are blessed, beta. मतलब God was planned कि हाँ, Dr. Akash is going. You have to get rank 4. हो सकता है। और आपसे बात करके मुझे ऑनेस्टली लग रहा है यार, आप ना मतलब यू विल गो ए लॉन्ग वे। अभी अपने काफी अच्छा। थैंक यू सर। लेकिन विच सब्जेक्ट यू आर प्लानिंग बेटा, विच सब्जेक्ट यू आर प्लानिंग? सर अभी के लिए तो मेडिसिन है। Medicine. You should take medicine, beta. you, थैंक you यू सर। you are an ideal student for medicine, beta. That's great. Now I'm coming on the role of DAMS family, beta. DAMS faculty, how they motivate you, how they help you in this success journey of rank 4. सर आई थिंक उनका काफी होलिस्टिक रहा, जैसे सिर्फ ऐसा नहीं कि अबाउट की एकेडमिक्स वाइज सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे सुमेर सर के शॉर्ट्स, लाइक इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स आते रहते थे। फिर लाइक आई आल्सो मैसेज सचिन सर रिगार्डिंग अ डाउट ऑफ एम्स एग्जाम। तो ऐसे काफी अप्रोचेबल लगे कि मतलब मुझे कोई एग्जाम रिलेटेड डाउट है तो मैं मैसेज कर सकता हूँ। तो मतलब इतना पर्सनल टच ऐसे मैंने बाकी बाकी जगह से नहीं देखा था। तो आई थिंक एक वो फैमिली का मतलब डैम फैमिली का वो सपोर्ट रहा था कि इवन लाइक डैम एक्सक्लूसिव क्लब ग्रुप हो गया, पर्सनल मैसेजेस हो गए, यूज्ड टू शेयर द नंबर विद अस ड्यूरिंग द क्लास के इतने सारे लोग को आप शेयर करो नंबर, बट स्टिल आई गेटिंग प्रॉम्प्ट रिप्लाई, सो दैट्स अ वेरी लाइक मोटिवेटिंग कि हाँ समवन इज इन टच विद मी, ऐसा नहीं कि पढ़ा के चले गए ऐसा। Very true. And this personal touch is required, beta, when you are under a big pressure of 19 subject. And I यस think सर। most of the students are from non-medical background. And if you get this personal touch from all the faculties, it helps a lot. Beta. I agree with you absolutely. Now I want to like this rank. I feel as a medico. I feel that this is the rank of your parents, beta, who sacrifice a lot for you. Any special words for your parents? यस सर। सर अभी भी मतलब टिल डेट मम्मी मेक श्योर दैट टिफिन रीचेज मी, मतलब मैं घर से टिफिन नहीं ले जाता ताकि थोड़ा पुराना ना हो जाए, 3-4 घंटे ही बट पुराना ना हो जाए। तो मम्मी मेक श्योर दैट शी सेंड्स द टिफिन वाया ड्राइवर, ड्राइवर comes to give drop it at the canteen and making sure that I am like कभी भी ऐसा नहीं कि like एक्स्ट्रा काम में लगा दिया, like सब घर के काम वो सब मैनेज हो जाते थे, इधर उधर से खुद कर लेते थे। और एट मतलब मुझे ऐसा था कि तुम सिर्फ मैं कंसंट्रेट कर पाऊँ, दैट इज व्हाट आई थिंक उनका काफी पाइवटल रोल था। एंड प्लस मोटिवेशन तो रहता ही था, मीन्स का वो टेस्ट खराब किया या फिर ऐसा लगने लगा कि अभी अच्छे नंबर नहीं आने वाले, तो उसमें भी बहुत अपलिफ्टमेंट रहा मेरे पेरेंट्स का। So convey our regards, beta. I feel थैंक यू you सर। they deserve this. The success is their success, beta. So just convey our regards. And at last, any special message for your juniors
whom you feel that they are more stronger than you. Yes sir, I think that पक्का next year तो बहुत ज़्यादा strong perform करेंगे. I'm very looking forward to my juniors giving like beating my record, going ahead of me. That is all I want from them. And I also have some people to thank. So I'll thank them. I have my friends in my college जिनके साथ मैं GT discussion करता था, doubts discussion करता था. I had Punya Murlidhar, Santosh, I had Ravish. Then I from my non-medicos friends as well. उनके साथ भी मेरी काफी कंपनी रहती थी. आयुष गुप्ता, कार्तिकेय, Aman Narula, Aman Patel. All these people had Manan Patel. Everyone had a very important role, although minor, although even major sometimes, but a role in this exam. So I wish everyone all the best for the next NEET exam. And I would also thank DAMS family for being a very important part of this journey. Thank you, beta. Thank you, Dr. Akash. And I feel this interview will be the best interview in which you have given the honest feedback, honest review. And the best part of the interview is that we can write one line into 10 lines. So pressure nahi lena humne. We should prepare for Yes, the NEET or next examination. Best wishes, beta. Best wishes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, so much.